नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी अग्रवाल, एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, प्रानिक हीलर. More than that, I think I'm just a person who wants to motivate everybody towards the positive. So आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? आराम से बैठिए. इसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है? तो मैं एक्चुअली क्या है, कर्सियंग से हूँ. वो एक छोटा सा एक हिल स्टेशन है बेस्ड इन दार्जिलिंग. एंड मैं शादी होके मैं कलकत्ता आ गई. और ऑफ कोर्स कलकत्ता तो एक कंक्रीट जंगल है, इतने सारे बिल्डिंग्स सब जगह ट्रैफिक है. एंड मैं बहुत ज़्यादा कर्सियंग को मिस करती थी. वहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स थे और फॉग था और इट वाज सो ब्यूटीफुल आउट देयर, द मिस्ट एंड द मकई बारी टी एंड द ऑरेंजेस. आई यूज्ड टू मिस ऑल दैट. बट लकीली just behind my bedroom window there was a huge beautiful जामुन tree. ओके, बहुत सुंदर एक तो जामुन ट्री था और उसमें बड़े बड़े सफ़ेद जामुन थे जो हवा में झूलते थे. एंड स्क्विरल्स वर प्रांसिंग अराउंड एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन. एंड मैं हर रोज़ हर रात को दिन में जब भी हो वो जामुन ट्री को देखती थी तो मेरे को लगता था मैं कर्सियंग में हूँ, मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ. और आपको पता है आप ना एक बंधन बना सकते हैं. कोई भी पता है आप ट्रीज़ भी बात करते हैं. तो मैं इस ट्री के साथ बात करती थी. मेरा वो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड था मेरा. दैट वाज माय सोर्स ऑफ सस्टेनेंस. ओके, पर एक दिन पता चला कि वो एक्चुअली क्या था, वो ट्री मेरे घर के बाजू वाले प्लॉट में था और उसका फुल ब्रांचेस एंड लीव्स सब कुछ मेरे विंडो की तरफ आता था. तो एक दिन मेरे को पता चला कि वो प्लॉट बिक गया है और वहाँ एक बड़ा प्रमोटर, एक बड़ा बिल्डिंग आने वाला है. वन ह्यूज बिल्डिंग इज़ गोइंग टू कम अप देयर एंड द प्लॉट हैज़ गॉट सोल्ड. Because I knew the people, I came to know much beforehand. So now the actual story begins, what I'm trying to tell you. Okay, what happened was, after that, I kept thinking only negative thoughts. Whenever I saw the tree, instead of giving me joy, that tree was only giving me tension. Whenever I saw the tree, I used to say, oh my God, the tree is going to get cut. Oh my God, the tree is going to get cut. I hate Calcutta. I hate all these promoters. मैंने कैसे लोग होते हैं, क्यों trees को काट रहे हैं. नॉन स्टॉप सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग चलते गया. ठीक है, और ये चला 2-3 महीने के लिए, बिकॉज उतना टाइम लगता है कोई भी बिल्डर को अपना पेपर वर्क करने या जो भी. फिर मैं एक छोटा से छुट्टी के लिए, फॉर अ स्मॉल हॉलीडे, आई वेंट अब्रॉड. एंड व्हेन आई केम बैक, आई सॉ, when I entered the bedroom and I saw that entire huge jamun tree had vanished and there was just one trunk and 2 small twigs, and all I could see was a bare ground, ugly ground with an old building and all construction material lying around. So instantly I knew that the promoter had cut the jamun tree and I was absolutely wild. मैं इतनी नाराज़ थी, मेरे को इतना ख़राब लग रहा था. मैं तुरंत उनको फ़ोन की, मेरे को उनका नंबर मिला. मैं उनको फ़ोन की और बोली कि sir, why did you need to cut the tree? It was right in the edge, it was not disturbing your planning. Why did you need to cut the tree? How can you cut such a ancient tree? And he just heard me out and said that Shivani ji, we haven't cut the tree. It was not part of our plan. It was not a requirement. You please find out. We have not done anything about it. In fact, let me find out and get back. And he called me after some time and he told me that the tree has been cut by your people. And imagine, I find out that my driver and my accountant and a whole lot of people who live in I have a small office next to my house, they thought that madam would be so happy because there were so many jamuns which were falling down and squirrels around, so there was a bit of dirt and mosquitoes were there. So madam would be so happy if the tree was cut and there will be sunlight coming in. Okay, so it is a fact that instead of that person, it was my own people who cut the tree. So why am I telling you this story? क्यों मैं ये आपको स्टोरी बता रही हूँ? इसलिए दोस्तों, क्योंकि प्लीज़ रिमेंबर, थॉट्स बिकम थिंग्स. आप जो सोचते हैं, आपके माइंड में जो घूमते रहता है, आपके विचार साकार हो सकते हैं. यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट व्हाट यू आर थिंकिंग.
In fact, one of the great spiritual leaders says that if you actually knew the power of your thought, you would never ever think a negative thought. It's so potent. So if my negative thinking could literally slaughter a big fat jamun tree right in front of me, imagine all the time when we are overthinking, when we are worrying, when we are imagining the worst. हम लोग का हैबिट होता है ना, जो अच्छा चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग कम सोचते हैं, पर जो ख़राब है उसके बारे में बात ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, बच्चों लोग के बारे में टेंशन करते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर होता है, राइट. पर अगर आप ये समझे कि नेगेटिव थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग नेगेटिव मे कम ट्रू, वो रियलिटी बन सकता है, तो यू हैव टू बी सो माइंडफुल. एवरी टाइम यू हैव टू बी सो अवेयर ऑफ योर थॉट्स. इसीलिए बोलते हैं कि माइंडफुल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है. माइंडफुल थिंकिंग ज़रूरी है. और पता है आपको एक बहुत सिंपल उपाय है जानने का कि अगर आप करेक्ट सोच रहे हैं या गलत. आप जस्ट गेज करिए आप कैसे फील कर रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, that means somewhere in your subconscious mind you have been having negative thoughts, somewhere you are worrying, because energy never lies. आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, कोई भी आदमी जो ग्रम्बल करता हो या नेगेटिव हो उसके साथ 10 मिनट टाइम स्पेंड करिए. आप देखिए आप थक जाएंगे, आपका एनर्जी पूरा ड्रेन्ड हो जाएगा. Because energy never lies, my friend. His negativity is getting onto you, it is penetrating into your aura. Similarly, your negative thought is going out into the universe and you will manifest that. So please remember this simple thing, that thoughts become things. And the reason I am telling you about this jamun tree is because every time you see a tree, maybe you can remember that, okay, I don't need to think negative. It can be a mnemonic. It can be a symbol for you. In fact, I want every single person to have that one reminder that thoughts become things and I need to think positive. I just want to give you one very simple example, one single affirmation rather, which you can keep with yourself whenever you have a negative thought, whenever you understand that you're thinking negative. Like I said, energy never lies, your body will tell you because you're not feeling nice. That time you just need to pause and say, I am the master of my thought. I am the master of my thought. Repeat this 4 times, 5 times, 6 times until you align back to the positive, or you are in that state where at least you are not thinking negative. So दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ह्यूमन माइंड का प्रॉब्लम है. ह्यूमन चैटर जो बोलते हैं ना, नॉन स्टॉप वो सोचते रहता है. द चैटर गोज ऑन एंड वी यूज़ आवर इमेजिनेशन. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव, वी इमेजिन द वर्स्ट ऑलवेज. So we need to put a stop to that, because like I repeat, thoughts become things and it is up to you. It is totally up to you and in your control to choose your thoughts. So from now on, make it a point that you are going to choose your thoughts, and they are going to be positive, empowering thoughts, and they will slowly become a part of your persona and then your destiny. Thank you so much.